I treat people on equal level. It doesn't make any difference to me whether I'm working with Ayushmann Khurrana or Amitabh Bachchan. You live in this country and you can't speak the language of this country. You can't read the language of this country. It's a shame. I doubt that most of the heroines from your Bollywood would be able to speak that good Hindi. आपके सामने एक स्टार आ गया, आपने कहा कि वो उसने बहुत अच्छा काम किया. अरे भैया, वो डायरेक्टर है जो इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म बनाते हैं. वो राइटर है जो इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन स्टोरी लिखता है. प्लीज उनको प्रायोरिटी दीजिए. आप चमचों की तरह भागिए मत किसी के पीछे. The kind of script, the kind of story, the kind of backdrop of the film, when I studied initially, when this film was offered, yes, I expected this kind of response, yes. Very good. It's a light-hearted film with a typical rustic Braj humor. And I'm quite confident that it will work and the audience will definitely appreciate, because Delhi backdrop people have seen, Mumbai backdrop they have seen, and UP Bihar backdrop, but the backdrop of Brij, Gokul and Vrindavan and Mathura was not seen that many times. So it was wonderful shooting in Gokul. I treat people on equal level. It doesn't make any difference to me whether I'm working with Ayushmann Khurrana or Amitabh Bachchan. I do my job with sincerity and honesty. And I am more concerned about the film in its totality. I'm not too bothered whom I'm working with. So everything is fine. I do my job with utmost sincerity, honesty, and I'm a very punctual and disciplined man. Well, I did not notice anything. Besides that, when he worked with me in Vicky Donor, he was a newcomer. And when he worked with me in Dream Girl, he became a star. So there has to be a difference between a newcomer and a star. I would not like to dwell further on this topic. What kind of message? It's just a light-hearted film. Don't try to look in every Hindi commercial film. Kindly don't try to look for the socially relevant or social significance in it. It's a light-hearted comedy film, and that's it. And boys playing female mythological character is not a new phenomena. It's a very, very age-old thing, so it's okay. Because of this director, a wonderful person, Raj Shandilya, the director, and this project is the second association of mine with Annu Kapoor and Mrs. Shobha Kapoor. So there were two, and the script and the role. Rather the beard which you see now, it is the courtesy of Mr. Raj Shandilya, because he said, no sir, I want real beard. So I said, okay, give me time. You have to adjust your dates. So let me grow the natural beard, and that is what happened. And it so happened that one after the moment I came with fully grown beard, I have finished 3 more films. One is released, Khandani Shafakana. This is going to be released, I think, on 13th September. Dream Girl.
and another will be releasing next year, and I will be doing another film in Uzbekistan directed by Farooq Kabir called Khuda Hafiz, but that's a very, very serious kind of subject and based on a true story. So because of Raj Shandilya, I had to keep this beard, but I don't know when I'm going to shave it off. I have done variety of roles using different dialects from our country. I have done a film where I've used a Creole dialect from Mauritius. In this, I'm using a dialect from Mathura, Vrindavan, that is Braj Bhasha. How a person from Braj region will speak Hindi. I'm not saying that I am speaking Braj Bhasha, but a person from Braj, how he will speak Hindi. Or Jolly LLB2, I give a little touch, little bit hint of doing little bit UP touch. And you saw in Khandani Shafa Khana or Vicky Donor, I did a Punjabi, Delhi Punjabi. Now another film is coming with Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Imran Hashmi and Riya Chakravarti and all that, where you will see me in a very, very different kind of role. So I have used. I would like to know who others are there who have used that many accents from this country, from India, using different dialects of our country, whether it's Punjabi, whether it's Haranvi, whether it's a Rajasthani, whether it's a Marathi accent, whether it's Braj accent or a Punjabi accent, with so much fluency. Why I'm saying that, unfortunately, in today's scenario, most of the actors, I see them reading their script in Roman Hindi. Roman Hindi, ROMANHINDI, Roman Hindi, MEIN, May, HI, he, Pad Sakta Hoon, PADH, this kind of, you know what is Roman? So it's a very ironically in this country that you live in this country and you can't speak the language of this country. You can't read the language of this country. It's a shame. So I was quite impressed with this girl, Nusrat Bharucha. She's a girl from today's cosmopolitan city, but yet she speaks very good Hindi. I'm very impressed. I doubt that most of the heroines from your Bollywood would be able to speak that good Hindi. I heard this girl called, I don't know, I hardly watch cinema. So I heard this interview of 5-10 minutes, this girl, Kangana Ranaut, she was speaking Hindi and brought so much delight and happiness to my heart. That there is a girl who is speaking and conversing in the same language which is the national language of this country. We should encourage these kind of people. Otherwise, what happens? That you work in Hindi cinema, but it's shame and ironical and pathetic that the same people, they can't even communicate in the national language of this country. So ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और आप लोग भी जर्नलिस्ट जो है ना, उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहते हो बहुत, जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है. तो हिंदी की खाते हैं, एहसान फरामोश हैं. ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. बहरहाल, कम बैक टू ड्रीम गर्ल की कामयाबी, ड्रीम गर्ल की सफलता, उसके विट और ह्यूमर और राज शांडिल्य के डायरेक्शन में है. असीम मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया है एज ए सिनेमाटोग्राफर, और हमारे पुराने भी मिल गए थे जो कोरियोग्राफर हैं, बहुत पुराने साथी हैं, बहुत ही नाम कमाए गणेश ने. तो जो 2-4 लोग मिले, उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आया. और मैं करियर के उस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि यंगस्टर्स ये सारे के सारे जो हैं बहुत
आदर, सम्मान और प्रेम देते हैं, और क्या चाहिए इस उम्र के अंदर। बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। Yes, and the very good change. Lot of professionalism is there. Very, very good. With the arrival of the corporate culture, the film industry, the film world has become more professional, more disciplined. What those nonsense is hardly visible there. And I'm very, very happy. Very, very happy. And as far as the different content coming out, that's a good sign. Although it will take a regular mainstream cinema and our audience to get matured in some time, but it's one of very, very good time of India. Very, very good time. And with the arrival of the new thought, new ideology, new government, new prime minister and new home minister, they have brought glory to the motherland. And that's very important. You got my point? You want me to name? Yeah, I'm ready to name. I don't belong to any political party, but the arrival of Narendra Modi and Amit Shah is a new era to India, where we Indians, as the nationalists, feel proud and will try our level best to bring glory to the motherland. Do you find me that fool that चलती हुई दुकान को बंद करना दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम है? आप समझे हिंदी? एक जिसकी दुकानदारी चल रही हो ठीक ठाक, उस दुकानदारी को कभी ठोकर नहीं मारनी है। आप तब भी और अब भी अच्छी स्क्रिप्ट लाइए। मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं काम करता हूं, पहले भी करता था और आज भी करता हूं। अच्छी स्क्रिप्ट लाइए, अच्छा रोल लाइए, अच्छा सेटअप लाइए, मैं काम करने को तैयार हूं। ना पहले मैं भागा था किसी के पीछे हाथ फैला के, और ना आज भागता हूं। खुददारी, स्वाभिमान पहले भी था, आज भी था, और जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा। रही बात ड्रीम गर्ल की, तो मैं राज शांडिल्य को, एकता कपूर को, श्रीमती शोभा कपूर को, और ऑन टॉप ऑफ ऑल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बड़े भाई श्री जितेंद्र कपूर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपकी ड्रीम गर्ल बहुत सुपरहिट फिल्म हो। Look, I would say the whole credit goes to the writers and the directors and the makers of these kind of films. Please, what's the bad habit that you are unable to differentiate between a good role and a good performance? आपके सामने एक स्टार आ गया, आपने कहा कि वो उसने बहुत अच्छा काम किया। अरे भैया, वो डायरेक्टर है जो इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म बनाते हैं, वो राइटर है जो इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन स्टोरी लिखता है। प्लीज उनको प्रायोरिटी दीजिए। आप चमचों की तरह भागिए मत किसी के पीछे। सो होल क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। और उससे पहले भी जो हमारा पैरेलल सिनेमा जहां से स्टार्ट हुआ था, जिसमें मृणाल सेन, मृणालदा चले गए हैं, श्याम बेनेगल थे, सत्यजीत रे थे, बड़े बड़े गोविंद नहलानी थे, बासुदा ने बिल्कुल एक अलग ही जॉनर बनाया था। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट किया, और आज नई जो जनरेशन है वो भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। आज कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को लेके, वो उरी का सब्जेक्ट हो या और दो चार इस तरह की फिल्में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। इट्स ए ग्लोरी है। द गोल्डन एरा ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हैज बिगन एंड इट शुड बी लाइक दैट। अ फिल्म के कंटेंट के ऊपर उसकी रेलेवेंस, सोशल सिग्निफिकेंस एंड एंटरटेनिंग वैल्यू ऑल शुड कंबाइन। ऑल शुड कंबाइन। प्रोड्यूसर इज सुप्रीम। प्रोड्यूसर, पहले जमाने में कहते हैं प्रोड्यूसर हमारा अन्नदाता है और डायरेक्टर हमारा कैप्टन है। भैया, उसको मान देना सीखो और राइटर को सलाम करना सीखो। अगर राइटर नहीं लिखेगा ना, तो आप जिन लोगों को बहुत महान एक्टर समझते हैं ना, वो अपनी तरफ से एक डायलॉग नहीं बोल पाएंगे कभी। इसलिए प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर, उनको मान, सम्मान और ऑनर देना सीखो। या इट्स ए गुड, मैं बार बार वो बोल रहा हूं, इट्स ए गुड साइन। जनता धीरे धीरे मैच्योर्ड हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और एज वी ग्रो, एज वी सी द प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी, प्रोस्पेरिटी ब्रिंग्स द वाइडर पर्सपेक्टिव, दिमाग का खुलापन नजरिया। अगर आपके जेब में 5,000 हैं तो आप शायद
खंडाला छुट्टी बिताने जाएंगे, लेकिन अगर जेब में 5 करोड़ हैं तो छुट्टियों में आप स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड जाने का मतलब है वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलना। वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलने का मतलब है आपका दिमाग अब बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, नज़रिया जो तंग था वो बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमारी ऑडियंस अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को स्वीकार करे, मान दे, सम्मान दे अच्छे कलाकारों का। धन्यवाद।